Now let us see about the musculature of the heart. जो heart की जो muscles हैं that are called the cardiac muscles, उस cardiac musculature में पहले जो ventricles हैं, the walls of the ventricles जो हैं वो thick होते हैं as compared to that of the atria. जो cardiac musculature है उसमें कुछ special tissue distribute होता है, that's called the nodal tissue. इस nodal tissue की कुछ special properties है, that it has the property of auto excitability. मतलब ये without any stimulus excite हो जाता है, action potential generate करता है without any stimulus, any external stimulus. इसका एक पैच जो इस नोडल टिश्यू का पैच जो होता है दैट्स प्रेजेंट इन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम. दिस इज द राइट एट्रियम एंड इन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम इज present the patch of this nodal tissue that's called the SA node. This is the SA node. Remember, this is important point, the position of the SA node or the location of SA node, that is it is present in the upper right corner of the right atrium. उसके बाद another mass of this nodal tissue is present in the lower left corner of the right atrium, close to the atrioventricular septum. This is the atrioventricular septum, and close to the atrioventricular septum is present another mass of this nodal tissue. This is called the AV node. उसके बाद इस AV node से कुछ bundles arise होती हैं that passes first into the atrioventricular septum and goes into the at the top of the interventricular septum and gets divided into the bundle fibers. AV bundles, a bundle of nodal fibers, atrioventricular AV bundles जिन्हें कहा जाता है, arises continues from the AV node. AV node से continue होके pass होती है through atrioventricular septum to emerge on the top of the interventricular septum and immediately divides into the right and left bundles, and divide होता है into the right and the left bundles. अब जो right and left these जो bundles होंगे वो arise करते हैं, वो gives rise to minute fibers throughout the ventricular musculature of the respective sides and are called Purkinje fibers. जो ये right and left muscle bundle fibers हैं उससे arise होंगे special fibers that are called the Purkinje fibers. वो distribute होंगे into each ventricular musculature. जो नोडल मस्कुलेचर है इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है दैट इट हैज़ द एबिलिटी टू जनरेट द एक्शन पोटेंशियल्स विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, दैट इज इट इज ऑटो एक्साइटेबल. यूजुअल जो मस्कुलेचर होता है, यूजुअल जो मसल सेल होती है, मसल फाइबर होती है, उसको एक एक्सटर्नल स्टिमुलस रिक्वायर होती है फॉर प्रोड्यूसिंग द एक्शन पोटेंशियल. बट दिस नोडल टिश्यू जो है ये एक स्पेशल मसल है, इसको विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई एक्साइट किया जा सकता है, दैट इज इट इज ऑटो एक्साइटेबल. However, जो ऐसे नोड है, AV नोड है, AV बंडल्स हैं, बंडल फाइबर्स हैं, परकंजी फाइबर्स हैं, ये डिफरेंट एक्साइड जो है एक्शन पोटेंशियल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. लेकिन जो नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स हैं, ऐसे नोड विल प्रोड्यूस वन नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स, AV नोड विल प्रोड्यूस अनदर नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स. जो नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स हैं दैट विल वेरी फ्रॉम ऐसे नोड टू AV नोड टू एंड देन टू परकंजी फाइबर्स. बट जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स इन अ मिनट जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है ऐसे नोड. ऐसे नोड कैन जनरेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स टू दैट इज 70 to 75 एक्शन पोटेंशियल्स पर मिनट. जो ही ऐसे नोड एक एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है दैट इज इट विल प्रोड्यूस वन हार्ट बीट. That we will be discussing in the upcoming sections. जो अब 70 to 75 action potentials produced by SA node in 1 minute will produce 70 to 75 heartbeats per minute and is responsible, जो SA node है यही responsible होता है for initiating as well as maintaining the rhythmic contractile activity of the heart. Therefore it's called that's why this SA node is called the pacemaker of the heart. Our heart normally beats 70 to 75 times in a minute. The average is 72 times per minute. That is why जो हमारा heart है उसकी जो heart rate है that is 70 to 75 times per minute, because जो ऐसे नोड है वो कितने एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है in a minute, that is 70 to 75 times, और जो उसका एवरेज होता है that is 72 beats per minute. As you can see here in this diagram that the position of SA node, this is the sinoatrial node, it's present in the right upper right corner of the right atrium. उसके बाद जो AV node है, atrioventricular node, is present in the lower left corner of the right atrium, and from the AV node arises the AV bundles, and AV bundles present in the ventricles along with the left and right bundles are called bundle of His, and उस bundle of His से फिर निकलती है left and right bundles and उससे फिर जाके आगे जाके निकलती हैं Purkinje fibers which supply the whole ventricle.
Now let us discuss another important topic of this chapter, that is the Codex Cycle. What is the definition of Codex Cycle? जो भी cycles, जो भी repetitive events होते हैं एक heart beat में, during one complete heart beat, जो भी repetitive events होते हैं and that are collectively called as Codex Cycle. Now let us see, जब भी Codex Cycle start होता है, all the four chambers of the heart are in relaxed state. तमाम atria and ventricles are present in relaxed state, and that condition is called the joint diastole. That is at the initial of cardiac cycle, the heart is present in the joint diastole, मतलब all the four chambers are in relaxed state. उस वक्त क्या होता है, जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व्स होते हैं दे आर ओपन एंड ब्लड जो आता है दैट डायरेक्टली गोज फ्रॉम दैट दीज आर द फोर पल्मोनरी वेन्स जो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं, दैट द ब्लड डायरेक्टली गोज फ्रॉम पल्मोनरी वेन्स डायरेक्टली इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड जो यहाँ से डिऑक्सीजन हमारी बॉडी टिश्यू से डिऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है फ्रॉम द मेजर वीनस, दैट डायरेक्टली गो फ्रॉम दीज वीनस इनटू द राइट वेंट्रिकल. और जो द सिमिल्यूनर वेल्व्स, उस टाइम जो सिमिल्यूनर वेल्व्स होते हैं, दीज सिमिल्यूनर वेल्व्स गार्डिंग द पल्मोनरी आर्टरी एंड द आयोटा, दैट दे आर क्लोज्ड एट दिस स्टेज ड्यूरिंग द जॉइंट डायस्टोल, दे आर क्लोज्ड स्टेट. और जो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया और राइट वेंट्रिकल में आ गया, उस वक्त ऐसे नोड नाउ जनरेट्स द एक्शन पोटेंशियल. अब ऐसे नोड अपना काम शुरू करेगा, ऐसे नोड अब एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, जिसकी वजह से एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे. बोथ द एट्रिया will contract simultaneously. That stage is called, the first stage is called the atrial systole. This stage is called the atrial systole. जब atria contract करेंगे due to the stimulation of the due to the action potential produced by the SA node. This increases the flow of blood into the ventricles by about 30%. उसके बाद यहाँ पे ब्लड, यहाँ से ब्लड आएगा, जो बचा हुआ ब्लड जो यहाँ एट्रिया में रह गया, अब इस ऐसे नोड के ऐसे नोड के कॉन्ट्रैक्ट करने के साथ वो एक्स्ट्रा ब्लड भी यहाँ आ जाएगा, and this blood will this flow of blood will be increased by 30%. Blood will be increased which will go from atria towards the ventricles. The action potential जो है is conducted to the ventricular side by AV node and AV bundles from where the bundle of his transmits it through the entire ventricular musculature. This causes the ventricular musculature to contract. अब जो ventricular musculature contract करेगा, that's called the ventricular. उसके बाद ventricular musculature जो है वहाँ पे जो nodal tissue है वो contract, वो action potential generate करेगा, that will be called the ventricular systole. The atria, उसी time atria undergoes relaxation. उसी time जो है atria जो है atrial diastole होता है, मतलब atria relax करते हैं coinciding with the ventricular systole. जो ही ventricular जो है contract करता है, उसी time atria जो है that will go into its relaxed state. अब जो ventricular systole increase the ventricular pressure, जब ventricular systole जब ventricles contract करेंगे, that will increase the ventricular pressure. Ventricles में जो pressure है that will be increased, causing the closure of tricuspid and bicuspid valve due to attempted backflow of blood into the atria. मतलब अब जो ही वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व्स होंगे वो क्लोज हो जाएंगे, to prevent the backflow of blood from atria from ventricles back into the atria. This backflow of blood is prevented by the closure of these tricuspid and bicuspid valves at the time of ventricular systole. As the ventricular pressure further increases, जो semilunar valves guarding the pulmonary artery on the right side and the aorta on the left side are forced open, allowing the blood in the ventricles to flow through these vessels into the circulatory pathways. मतलब अब जो ही वेंट्रिकुलर प्रेशर और ज़्यादा इंक्रीज होगा, जो ये सिमिल्यूनर वेल्व्स होंगे they will open and the blood will go from right ventricle into the pulmonary artery and from left ventricle into the aorta and then will go into the circulatory pathways. उसके बाद अब जो ही ब्लड वेसल्स तक ब्लड चला गया, लंग्स तक और बॉडी टिश्यूज तक ब्लड चला गया, द वेंट्रिकल्स विल नाउ रिलैक्स. जो वेंट्रिकल्स हैं वो अब रिलैक्स करेंगे, दैट्स कॉल्ड द वेंट्रिकुलर डायस्टोल एंड द वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल्स. अब उसकी वजह से जो है वेंट्रिकुलर प्रेशर है वो डिक्रीज होगा एंड कॉजिंग द क्लोजर ऑफ सिमिल्यूनर वेल्व्स. जो सिमिल्यूनर वेल्व्स वेंट्रिकुलर प्रेशर के इंक्रीज होने की वजह से ओपन हो गई, अब वेंट्रिकुलर प्रेशर जब डिक्रीज होगा वो खुद ब खुद क्लोज हो जाएंगे एंड विल प्रिवेंट द बैकफ्लो
flow of blood into the ventricles. As the ventricular pressure declines further, the tricuspid and bicuspid valves are pushed open by the pressure in the atria exerted by the blood which was being imparted into them by the veins. नौ मतलब एट द एंड ऑफ जो है जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल खत्म हो जाएगा, जब और ज़्यादा वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्रीज होगा, जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व्स होंगे वो खुद ब खुद ओपन हो जाएंगे, एंड दैट विल द ब्लड एज अ रिजल्ट द ब्लड वंस अगेन मूव्स फ्रीली टू द वेंट्रिकल्स. अब दूसरा साइकिल स्टार्ट होता है, मतलब जो ब्लड होगा वो डायरेक्टली जाएगा इनटू द वेंट्रिकल्स. द वेंट्रिकल्स एंड एट्रिया आर नाउ अगेन इन द रिलैक्स्ड स्टेट कॉल्ड द जॉइंट डायस्टोल. सून द ऐसे नोड, अब उसके बाद ऐसे नोड फिर से एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा जिसकी वजह से 30% ब्लड फ्लो टू द वेंट्रिकल्स और इंक्रीज हो जाएगा, एंड एक्शन इवेंट्स जो एक्शन पोटेंशियल एंड इवेंट्स डिस्क्राइब्ड जो है वो रिपीट हो जाएंगे, एंड दिस इज कॉल्ड द कार्डियक साइकिल. नाउ लेट्स ट्राई टू Now let's try to summarize the cardiac cycle. सबसे पहले जो है all the four chambers of heart are in relaxed state. That's why this condition is called joint diastole. उसके बाद जो है ऐसे नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा जिसकी वजह से एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, एंड दैट स्टेज इज कॉल्ड द एट्रियल सिस्टोल. उसके बाद ब्लड आएगा वेंट्रिकल्स में. अब वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है, अब दैट कंडीशन इज कॉल्ड द वेंट्रिकुलर सिस्टोल. उसके बाद एट द टाइम ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल एट्रिया आल्सो रिलैक्सेस. दैट्स व्हाई the ventricular systole and the atrial diastole occur simultaneously. उसके बाद जब वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्लड चला गया into the circulatory pathways, अब वेंट्रिकल्स को रिलैक्स करना है, and the stage is called the ventricular diastole. These sequence of events right from the joint diastole up to the ventricular diastole are collectively termed as cardiac cycle, and इसका जो टाइम पीरियड है that is 0.8 seconds. और जो एक कार्डियक एक बीट में जो है जो 60 सेकंड्स में एक मिनट में जो है 72 कार्डियक साइकिल्स होते हैं, मतलब एक मिनट में जो है 72 कार्डियक साइकिल्स होते हैं. This means one cardiac cycle is completed in 0.8 seconds. Now, these sequential events in the heart, which is cyclically repeated, is called the cardiac cycle. जैसा कि अभी हमने बताया, इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ बोथ द एट्रिया एज वेल एज वेंट्रिकल्स. जो है इसमें जो है दोनों एट्रिया का सिस्टोल भी आता है, दोनों वेंट्रिकल्स का डायस्टोल भी आता है. एज मेंशन्ड अर्लियर, हार्ट बीट इज 72 टाइम्स per minute. That many cardiac cycles are performed per minute. मतलब 72 cardiac cycles are performed per minute. From this it could be deduced that the duration of cardiac cycle जो है that is 0.8 seconds. Duration of cardiac cycle, इसका टाइम पीरियड हम ऐसे भी निकाल सकते हैं 60 divided by 72. This is 0.8 seconds जो है this is the duration of the cardiac cycle. अब during a cardiac cycle each ventricle pumps out हर एक वेंट्रिकल जो है, दोनों वेंट्रिकल जो है, each ventricle pumps out 70 milliliters of blood which is called the stroke volume. अब एक कार्डियक साइकिल में हर एक वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप करेगा, that's called the stroke volume, or we can say that the blood pumped by heart per beat, or the blood pumped by each ventricle in one cardiac cycle or in one beat is called the stroke volume. This stroke volume, अब हमें पता है जो stroke volume है that is 70 milliliters, and कितने stroke volumes एक मिनट में प्रोड्यूस होंगे that is 60, and this will be equal to 72, सॉरी, एक मिनट में 72 स्ट्रोक वॉल्यूम्स प्रोड्यूस होंगे, दैट इज 60 मल्टीप्लाइड बाय 70 multiplied by 72, that will be approximately 5 liters, and this is called the cardiac output. Remember this formula of cardiac output. Cardiac output is equivalent to stroke volume multiplied by heart rate. हमारी बॉडी की एक स्पेशल एबिलिटी होती है दैट इट कैन ऑल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम एज वेल एज द हार्ट रेट. जब स्ट्रोक वॉल्यूम भी ऑल्टर हो जाएगा, हार्ट रेट भी ऑल्टर हो सकती है. दैट्स वाई कार्डियक आउटपुट कैन ऑल्सो बी ऑल्टर्ड. फॉर एग्जाम्पल जो एथलीट्स का कार्डियक आउटपुट होता है दैट्स मच हायर देन दैट ऑफ द ऑर्डिनरी मैन.
नाउ हर एक कार्डियक साइकिल में जो है दो प्रोमिनेंट साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं. वन इज कॉल्ड द लब, फर्स्ट साउंड इज कॉल्ड द लब साउंड एंड द सेकंड साउंड इज कॉल्ड द डब साउंड, लुब डुब जिसे कहा जाता है. लेकिन जो दोनों ये साउंड्स है दैट आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द क्लोजर ऑफ वेल्व्स, ड्यू टू द क्लोजर ऑफ स्पेशल टाइप्स ऑफ वेल्व्स. फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट हार्ट साउंड है दैट इज द लब साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द विद द क्लोजर ऑफ द ट्राइकस्पिड वेल्व. जब ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व्स क्लोज हो जाएंगे तभी फर्स्ट साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी. और जो सेकंड साउंड होगी दैट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वेल्व्स. इन हार्ट साउंड्स की एक इंपॉर्टेंट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है. मतलब अगर किसी को हम हार्ट साउंड से देखेंगे तो अगर उसका हार्ट साउंड अबनॉर्मल आ जाएंगे तो वो दैट इज एसोसिएटेड विद सम डिजीजेस. फॉर एग्जांपल कार्डियक मर्मर्स कैन बी देयर. दैट्स व्हाई हार्ट साउंड्स आर ऑफ ग्रेट क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस. Now let us discuss about the another concept associated with the heart, that is the ECG. जब भी हम हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को देखने जाते हैं तो वहाँ पे पेशेंट एक मशीन के साथ कनेक्ट हुआ होता है जो उस पेशेंट के हार्ट के जो है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दिखाता है. दैट इज़ कॉल्ड द ECG. उस मशीन को कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. और जो वहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है दैट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. रिमेंबर दिस थिंग, जो मशीन होती है दैट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, यहाँ पे उल्टा है. और जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है ग्राफ वहाँ पे आता है दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. रिमेंबर दिस थिंग. जो ECG है, ECG की सिग्निफिकेंस क्या है, ECG क्या दिखाता है हमें. ECG जो है इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी. इट शोज द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग ए कार्डियक साइकिल. एक स्टैंडर्ड ECG को ऑब्टेन करने में 3 लीड्स की ज़रूरत पड़ती है. 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स की ज़रूरत पड़ती है जिसमें एक जो है रिस्ट पे लगा होता है और दूसरा जो है 1 to each wrist and to the left ankle. So here we will look about the standard ECG in which 3 leads are required. और जो अगर डिटेल्ड एवाल्वेशन के लिए बहुत सारी लीड्स का इस्तेमाल किया जाता है. जो यहाँ पे दिखाया गया है दैट इज़ द स्टैंडर्ड ECG. दिस इज़ द स्टैंडर्ड ECG. So each peak in ECG is identified with a letter from P to T that corresponds to a specific electrical activity of the heart. वहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है जो letters यहाँ पे दिए गए हैं what they represent. Each letter from P to T represents the specific electrical activity of the heart. For example, during the cardiac cycle, P represents the atrial contraction, QRS represents the ventricular contraction, and T represents the ventricular relaxation. That's why these letters represent the specific cardiac activity of the heart during the cardiac cycle. जो P wave होती है that represents the electrical excitation or depolarization of the atria. Means जो P wave होती है that represents the atrial systole. Or the systole is also called the depolarization, or the contraction or excitation is called the depolarization. जो उसके बाद QRS complex होता है that represents the depolarization of the ventricles. Depolarization means contraction of the ventricles or the systole of ventricles. जो QRS complex होता है that represents the ventricular systole. उसके बाद जो contraction starts shortly after Q, ventricular contraction starts shortly after Q and marks the beginning of the systole. जो systole का beginning होता है that is marked by this Q. Q represents the beginning of the systole. जो T होता है, T wave represents the return of the ventricles from excited to normal. मतलब repolarization or relaxation. Relaxation is also called repolarization or the diastole. The end of the जो T wave होता है that represents the ventricular diastole. The end of the T wave marks the end of the systole. और जो T wave का end होता है it marks the end of the systole. Obviously, by counting the number of QRS complex, we know that this is the representation of one cardiac cycle. अब एक cardiac cycle में एक QRS complex होगा. अब जितने अगर हमें कोई ग्राफ दिखाया जाएगा उसमें 10 number of QRS complex होंगे. That means there are 10 number of cardiac cycles. That is, the number of QRS complex is called number of the cardiac cycles. Obviously, by counting the number of QRS complexes that occur in a given time period, one can determine the heartbeat rate or the cardiac cycles of an individual, or cardiac cycle is also called the heartbeat. Since the ECG obtained from different individuals have roughly the same shape for a given lead confirmation, अगर किसी के ECG में कोई variation आ गई that represents some sort of disease in that patient, hence ECG has a great clinical significance.
Now let us discuss about the double circulation. Since we know that जो हमारा circulatory system है वो that is the closed type, closed circulatory system, the blood that is the blood strictly flows into the blood vessels, arteries and veins. Basically जो arteries and veins होते हैं उनके तीन layers होते हैं. जो inner lining होती है innermost lining होती है that's made up of special epithelium called the squamous endothelium और उस layer को कहते हैं tunica. उस layer that's the layer is called the tunica intima. जो middle layer होती है that contains the smooth muscles and elastic fibers. Remember this thing, the middle layer contains smooth muscles and elastic fibers, that's called the tunica media. और जो external layer होती है that contains the fibrous connective tissue with collagen fibers, that is called the tunica externa. जो tunica media होता है, the only difference between arteries and veins is that जो tunica is lies in their tunica media layer. जो tunica media of जो veins होता है that's comparatively thin as compared to that of the arteries, that's उनका जो muscle, this is suppose vein, lumen of a vein, this is the artery. जो इनका जो मस्कुलर मिडल लेयर में मसल्स होंगे वो that will be less content, एंड इसमें जो है जो ज़्यादा कंटेंट होगा मिडल लेयर में, मसल्स ज़्यादा होंगे, दैट इज़ द ट्यूनिका मीडिया इज़ कंपेरेटिवली थिन. इन जो इनका ल्यूमन होगा वीन्स का ल्यूमन होगा दैट विल बी ब्रॉडर बिकॉज इनका जो ट्यूनिका मीडिया है दैट इज़ थिन एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द आर्टरीज. As you can see here in this diagram, जो vein का lumen है that is broad और जो artery का है that is narrow, because जो इसमें smooth muscle content है middle layer में tunica media में smooth muscles का जो content है that is less और जो इसमें जो smooth muscles का content है that is more. That's why veins have broader lumen as compared to that of the arteries. Now, as mentioned earlier, the blood pumped by right ventricle enters the pulmonary artery. राइट वेंट्रिकल से ब्लड पंप होके चला जाता है पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी फिर लंग्स तक ब्लड को ले जाता है. और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है दैट पंप्स द ब्लड इनटू द आयोटा. जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो पंप करता है ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द आयोटा. जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो राइट वेंट्रिकल है दैट पंप्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी इज पास्ड ऑन टू द लंग्स. वो लंग्स तक ले जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाय द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड आउट. वहां से ऑक्सीजनेशन होके फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है दैट इज कैरिड बाय द पल्मोनरी वेन्स into the left atrium. This pathway constitutes the pulmonary circulation. Let us understood this pulmonary circulation at this diagram. जो हमारी body tissues से जो deoxygenated blood आएगा through great veins वो चला जाएगा into the right atrium and right atrium से जाएगा into the right ventricle. Right ventricle जो है इसको pump करेगा through pulmonary artery and pulmonary artery इसको lungs तक ले जाएगा where oxygenation occurs and then oxygenated blood will be transported back from lungs to the left atrium through pulmonary veins. There are 4 pulmonary veins और उन pulmonary veins से फिर left atrium से this type of circulation is called pulmonary circulation. Pulmonary circulation starts from the right atrium and goes into the pulmonary artery then lungs and from lungs into the left atrium. This circulation is called the pulmonary circulation. उसके बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा फ्रॉम पल्मोनरी वेन्स वो चला जाएगा इनटू द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम वो पंप करेगा इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल उसको पंप करेगा इनटू द आयोटा. Entering the aorta is carried by a network of arteries, arterioles and capillaries to the tissues from where the deoxygenated blood is collected by the system of venules, veins and vena cava and imported into the right atrium. This is the systemic circulation. Now let us see at this systemic circulation. अब जो oxygenated blood आएगा from pulmonary veins into the left atrium और left atrium से चला जाएगा into the left ventricle उसको pump करेगा into the aorta and aorta से फिर different arteries, arterioles और capillaries से ये चला जाएगा into the body parts यहाँ पे exchange होगा और then deoxygenated blood will be transported back into the right atrium and this type of circulation is called systemic circulation. Systemic circulation includes left ventricle से pump करेगा into the aorta से चला जाएगा into the different arteries and arteries से चला जाएगा into the tissues and tissues will transport back the deoxygenated blood through major veins or great veins into the right atrium. This type of circulation is called the systemic circulation. अब इस सिस्टमिक सर्कुलेशन की फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन
nutrients, oxygen, and other essential substances to the tissues and takes carbon dioxide and other harmful substances away for elimination. Now, a unique vascular connection exists between the digestive tract and the liver called the hepatic portal system. हम सब जानते हैं कि जो भी ब्लड किसी भी ऑर्गन से जाके फिर वापस आता है टू द राइट एट्रियम, लेकिन जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वहाँ से कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस ब्लड में जाते हैं. दैट्स वाई it cannot be transported directly to the heart because it will affect the circulatory system, or in precise word it can affect the heart musculature. That's why जो blood होता है from digestive tract उसको deviate किया जाता है, उसको लिया जाता है first to the liver and then back to the right atrium. The main purpose of this is to detoxify the toxic substances that are present in the blood of digestive system. That's why liver has the main function of detoxification or xenobiosis. This type of vascular connection is called the hepatic portal system. The vein that is involved in this hepatic circulation is called hepatic portal vein. This vein carries blood from intestines to liver before it is delivered to the systemic circulation for detoxification of the toxic substance. A special coronary system of blood vessels is present in our body exclusively for the circulation of blood to and from the cardiac musculature. अब हार्ट को भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, गैसेस की ज़रूरत है, उसको भी एक ब्लड सप्लाई की ज़रूरत है. That the system of circulation is called the coronary system of the blood circulation. Now let us discuss about the regulation of the cardiac activity. जो normal activities हमारे heart की होती है that are regulated intrinsically because of presence of a specialized muscle that is called nodal tissue. Since our heart has the intrinsic control without the involvement of brain, hence this is called the myogenic heart. लेकिन कुछ थोड़ा बहुत control होता है, special center होता है in the medulla oblongata, वहाँ पे कि वो moderate कर सकता है cardiac function through autonomic nervous system by autonomic nervous system. जो autonomic nervous system के उसके दो parts होते हैं, parasympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. अगर जो neural signals आएंगे from sympathetic nervous system, it can increase the rate of heartbeat. एक तो heartbeat increase होगी, strength of ventricular contraction भी increase होगी and thereby the cardiac उसके साथ cardiac output increase हो जाएगा. On the other hand, अगर पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम से सिग्नल्स आएंगे तो वो डिक्रीज करेगा बोथ हार्ट रेट भी एंड द स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन भी. दैट्स व्हाई इट कैन डिक्रीज द न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम कैन डिक्रीज द कार्डियक आउटपुट. और एडिशनल इफेक्ट है ऑफ द एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन्स. जो एड्रेनल मेडुलर हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, फॉर एग्जांपल एड्रेनलिन है, दैट हार्मोन्स कैन आल्सो इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट. दीज हार्मोन्स इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट. रिमेंबर दिस थिंग. मेजॉरिटी ऑफ द नॉर्मल एक्टिविटीज जो है वो हार्ट इंट्रिंसिकली कंट्रोल करता है बाय द स्पेशल नोडल टिश्यू प्रेजेंट इन द मस्कुलेचर ऑफ हार्ट. दैट्स व्हाई आवर हार्ट इज द मायोजेनिक हार्ट. Now let us discuss about the last topic of this chapter, disorders of the circulatory system. सबसे पहले हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर की. दैट्स आल्सो कॉल्ड हाइपरटेंशन. जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है हमारी बॉडी का, दैट इज 120/80. अगर persistent blood pressure होगा more than hypertension is the term used for blood pressure higher than that of the normal. जो है अगर normal से ज़्यादा होगा that's called the hypertension. In this measurement जो 120 है, this represents the systolic pressure. 120 mmHg represents the systolic or pumping pressure, and जो 80 mmHg है that represents the diastolic or the resting pressure. If repeated checks of blood pressure of an individual is 140/90 और हायर इट शोज हाइपरटेंशन. अब रेगुलर चेक्स के साथ अगर ये रीडिंग आती है तो दैट कंडीशन शोज हाइपरटेंशन ऑफ द पेशेंट. जो हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड परसिस्टेंट हाई ब्लड प्रेशर है, दैट इज अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर है मोर देन 140/90 है, दैट विल लीड टू हाइपरटेंशन. और जो हाई ब्लड प्रेशर लीड्स टू हार्ट डिजीजेस एंड आल्सो अफेक्ट्स वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन एंड किडनी. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कोरोनरी आर्टरी डिजीज.
दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एथेरोस्क्लेरोसिस। दिस डिजीज इज ऑल्सो कॉल्ड एथेरोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है, जो आर्टरी हार्ट ऑफ द मस्कुलेचर को सप्लाई करती है ब्लड, दैट्स कॉल्ड द कोरोनरी आर्टरी। उसमें क्या होता है, इट इज कॉज्ड बाय डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट एंड कोलेस्ट्रॉल। रिमेंबर दिस थिंग, कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड द फाइब्रस टिश्यू। इस कोरोनरी आर्टरी में डिपॉजिट होते हैं ये चीज़, फॉर एग्जांपल कैल्शियम होता है, फैट होता है, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू डिपॉजिट होता है। एज अ रिजल्ट जो इसका ल्यूमेन होता है दैट गेट्स नैरोअर, और जो ब्लड सप्लाई है दैट गेट्स ब्लड सप्लाई टुवर्ड्स द हार्ट मस्कुलेचर गेट्स रिड्यूस्ड, एंड दिस इज कॉल्ड द कोरोनरी आर्टरी डिजीज और एथेरोस्क्लेरोसिस। उसके बाद हम बात करेंगे एंजाइना की। एंजाइना जो है इट्स आल्सो कॉल्ड एंजाइना पेक्टोरिस। पेक्टोरिस मतलब इट इज एसोसिएटेड विद द चेस्ट, अ सिम्टम ऑफ द एक्यूट चेस्ट पेन। इसमें क्या होता है, चेस्ट पेन होता है, एक्यूट चेस्ट पेन अपीयर्स व्हेन, कब होता है, जब व्हेन नो इनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग द हार्ट मसल। इन दिस कंडीशन देयर इज द डिफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन रीचिंग द हार्ट मसल। एंजाइना जो है वो हर एक में होता है, दैट ऑकर इन मेन एज वेल एज वुमेन ऑफ एनी एज। किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, इन बोथ मेन एज वेल एज वुमेन, लेकिन इट इज मोर कॉमन अमंग द मिडिल एजड एंड एल्डरली पीपल। उनमें ये कॉमन होता है। ये कैसे हो, इट ऑकर्स ड्यू टू द, इसका कॉज क्या है, इट ऑकर्स ड्यू टू द कंडीशन दैट अफेक्ट्स द ब्लड फ्लो। अगर ब्लड फ्लो अफेक्ट होती है तो सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई भी डिक्रीज होगी। एज अ रिजल्ट देयर विल बी acute chest pain called the angina or angina pectoris. Let us now move forward. नाउ लेट अस सी हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर क्या होता है, ये वो स्टेट होता है हार्ट का व्हेन हार्ट इज नॉट पंपिंग द ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी। जो इसमें जो है दो तीन डेफिनेशंस है, वो याद ही रखने हैं आपको। जो हार्ट फेलियर होता है वहाँ पे उसकी क्या डेफिनेशन है, द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट्स नॉट पंपिंग द ब्लड इफेक्टिवली थ्रू द बॉडी इनफ टू मीट द बॉडी नीड्स ऑफ द बॉडी। इट इज समटाइम्स कॉल्ड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी कहा जाता है, बिकॉज कंजेशन ऑफ, इसमें जो मेन सिम्टम है दैट इज द कंजेशन ऑफ लंग्स इज द मेन सिम्टम ऑफ दिस डिजीज। बिकॉज जब हार्ट इनफ ब्लड पंप नहीं करेगा तो लंग्स की तरफ भी ब्लड जो है, ब्लड फ्लो जो है दैट विल बी रिड्यूस्ड, एंड दैट्स व्हाई द कंजेशन ऑफ लंग्स इज द मेजर symptom of this disease. That's why this heart failure is sometimes called as congestive heart failure. उसके बाद जो हार्ट फेलियर यहाँ उसने कहा, इसने दिया है कि हार्ट फेलियर जो है यहाँ पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं फ्रॉम कार्डियक अरेस्ट एंड द हार्ट अटैक। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, जब हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, जब सीधे हार्ट जो हार्ट की बीटिंग है दैट विल बी स्टॉप्ड। और उसके बाद जो हार्ट अटैक है, हार्ट अटैक में जो हार्ट मसल्स ऑफ द हार्ट जो है दैट विल बी डैमेज्ड बाय द इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। ट्राई टू डिफरेंशिएट दीज थ्री। जो हार्ट फेलियर होता है दैट इज व्हेन द हार्ट इज नॉट पंपिंग द ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी। उसके बाद जो हार्ट कार्डियक अरेस्ट है दैट इज व्हेन हार्ट स्टॉप्स बीटिंग। और उसके बाद जो हार्ट अटैक है व्हेन द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज्ड बाय द inadequate blood supply. Here is the end of this chapter. So guys, if you like this video, please share and subscribe.